What's up, people? You're watching Deck of Codes and I am Priyank. I'm new, as you know. मेरे को पता नहीं है एक्चुअली YouTube पे कौन सा कंटेंट आप लोग को चाहिए. आप अगर जो भी देख रहे हो, 10 लोग 20 लोग, कमेंट में मेरे को बताओ कि what all I need to improve in my content. ओके जैसे अभी मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला कि आई नीड मोर ईजी कंटेंट और आसान भाषा में. सो आई एम गोइंग टू टीच यू इन हिंदी एज वेल नाउ. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस बिकॉज दिस इज़ माई 4th वीडियो एंड आई नीड टू कीप इट वेरी सिंपल. और आगे जाके थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा तो मेरे को और आसान भाषा में एकदम लेमैन्स टर्म में कट डाउन करके आपको बताना है, इसीलिए. सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो टुडे. आज मैं आपको स्ट्रिंग्स के बारे में सिखाऊंगा. स्ट्रिंग्स. लेट स्टार्ट. सो आई हैव क्रिएटेड माई रेपल, named it string, and let's start. So you know what is string na. Let me write game equal to PUBG. Chalo, I love the game PUBG na, that's why I'm writing PUBG. So this is a string basically, or in this string there are 4 letters PUBG. So there are 4 elements and we can take एनी एलिमेंट. हम लोग कोई भी एलिमेंट यूज़ कर सकते या फिर प्रिंट कर सकते यूजिंग देयर इंडेक्स. लाइक इफ आई राइट गेम 1 and if I print it, तो if I print it, see u print हुआ. क्यों? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट p है बट द इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3. so game 1 is u, and if I print copy this, copy paste करो बाबा, it's very easy. Control C Control V. See now it's p. Understood? And then if I want to access 3 elements like पहले से b तक only, so if I just have to write 0 to 3. See PUB. Now here it's 3. So 0 1 2 3. थर्ड एलिमेंट इज G. तो वो एक्सेस नहीं होगा उसके पहले तक का, सिर्फ मतलब 0 1 and 2. समझे? एंड द सेम थिंग इफ आई वांट टू एक्सेस द लास्ट 3 एलिमेंट्स. सो 1 से लेके लास्ट. इफ आई डोंट राइट द लास्ट एलिमेंट ऑल्सो इट्स ओके. सी कि लास्ट तक, एंड तक, इसमें भी इफ आई डोंट राइट द फर्स्ट एलिमेंट इट्स ओके. सी PUB and G. नाउ इफ आई राइट इज नॉट कमिंग बैक, ऑफेंड नहीं होना, बट इफ आई राइट PUBG इज नॉट कमिंग बैक एंड दिस इज द गेम. सी PUB एंड PUBG इज नॉट कमिंग बैक. PUBG. सो अभी मेरे को नॉट नहीं चाहिए, मतलब PUBG शुड कम बैक ना. So I will just write game equal to game dot replace क्या, not. किसके जगह पे? कुछ नहीं, ब्लैंक. नॉट के जगह पे कुछ नहीं चाहिए. सो नाउ ओके, हाँ मेरे को प्रिंट भी करना है. प्रिंट, इफ आई प्रिंट जस्ट गेम and if I run it, see PUBG is coming back. Now what is this? What is point? Point के बाद क्या है? I will explain you now. So Python is an object oriented programming. तो Python में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट बन जाता है जो वो स्ट्रिंग क्लास का हर एक फंक्शन वो ग्रास्प कर सकता है. अभी मैंने गेम एक वेरिएबल बनाया तो वो क्या है, वो स्ट्रिंग है. तो स्ट्रिंग का जो भी फंक्शंस है वो उठा सकता है. ऑब्जेक्ट बन गया स्ट्रिंग. तो ही कैन यूज एवरीथिंग व्हाट स्ट्रिंग कैन यूज. लाइक इफ आई से प्रिंट डिक्शनरी dir of game, and if I run it, it will show me all the functions that I can use in it. See, like reindex, index change karo, then there is upper, there is title, there is strip,
there is index. Like if I say, for example, print game dot upper, तो मैंने एक स्ट्रिंग का अपर फंक्शन यूज किया है और वो प्रिंट किया है. सो सी, all the letters are in the upper case, and if I say lower, print game dot lower, and if I run it, see, सब लोअर केस में. वैसे लोअर केस में ही था तो ज़रूरत नहीं है. आई एम जस्ट रिमूविंग दिस. नाउ दिस इज what is string and its functions. So let's do something new, like some of my guns that I use. So my guns are AKM and M416. AKM and M416, I use these two guns. और मेरा एक और गन है जो मेरे को सिर्फ क्रेट में मिलता है, दैट्स gun 1. I will write it like gun 1, MK14. हाँ. और if I want to add these two strings, you don't need to worry about anything. बीच में प्लस डालो, it will get added. Like if I say print guns plus gun 1, and if I run it, see, दोनों ऐड होके आ गया. अंडरस्टूड? स्पेस नहीं है. if you want to add space, just you have to do double inverted commas or single inverted commas and plus. see, now वो एक स्पेस भी ऐड कर देगा. so this is how you add every string. you can add any string you want, just बीच में प्लस डालना. so now let's say I have gun. My gun is M, and my model is 249 machine gun. So if I want to add these two, model and gun, so gun model, gun with model equal to gun plus model, and if I run it, it will show me an error. See, error. Why? Because this is an integer and this is a string. You can't add an integer and a string, so we have to first make this a string. string कैसे बनेगा? str डालो, ब्रैकेट के अंदर डालो, and that's it. this became a string. समझे? now if I print gun with model, and if I run it, see, M249. समझे? so this is how you add a string. now there are 2-3 things in a string what you can put. जैसे print I am leader of my team. I am leader of my team. And if I want to print this in 2 lines, so I can use \n, and if I run it, see, it will show me I am, then \n मतलब नीचे गया, leader of my team. अभी if I do the same, there is one more thing, \t जो tab add करता है, it will give a big space in between. see, now these two things, and if I write print leaders apostrophe s, leaders should lead the team. so see, there are 2 apostrophes, that's why वो आगे का रीड नहीं कर पा रहा है. मैं रन करूँगा, सिंटैक्स एरर आएगा. so for this you have to just put a \, over here and run it. see, leaders should lead the team. This is just an example. Leaders goal is to lead the team. now see here, if I write print
I use, then I have to add plus, then guns, then plus, then and, then again plus, then gun 1, then plus, then I use guns in my game. So if I run it, see I use AKM M416 and वो भी spacing भी बराबर नहीं है. I have to put spaces over here, and when I run it, see I use AKM M416 and MK14 guns in my game. So now how can I write this in an easy way? So there is formatted string जो Python 3.6 के बाद आया, Python 3 में है, that you have to just write a F in ahead, formatted strings, bus. Now I don't need plus signs, nothing. I just use curly braces where I need to take the values from the code, like that's it. और कुछ नहीं करना है. गन इसमें भी ये कर दिया and बस. And if I run it, see I use AKM for it gave me the same result, but formatted string is easier way to write the result, अच्छे से दिखता है. So that's it for today. अगर आपको कुछ डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में लिख दो. हिट द लाइक बटन, do share and subscribe. Thank you.